Yes, hello, Anurag. Welcome on YourPedia platform, and let's start your snap thermodynamics for your BEML interview. Thank you, sir. So, Anurag, what you studied in this subject, thermodynamics? Sir, actually, I have studied all the laws in the thermodynamics, and I have studied the different properties and state of the state surroundings and all. And I have also studied about exergy, entropy, properties of those systems, and all the applications of all the three laws of the thermodynamics. Can you tell me something about the Joule's experiment? Sir, Joule's experiment. Joule's experiment. Uh, Joule's experiment related to first law of thermodynamics. Sir, according to first law of thermodynamics, the energy is conserved. It cannot be created or it cannot be destroyed. According to Joule's experiment, sir, when a system is taken in a thermodynamic cycle, the energy of the system, the total heat input given to the system, and the total work output coming out of the system will be equal, sir. Achha, which equation we use for representing the PVT relation, pressure, volume, and temperature relationship for ideal gas and real gas? Sir, so for ideal gas, characteristic gas equation, we will use PV is equal to MRT. For real gas, we have Van der Waals equation. Van der Waals equation. Can you recall that equation? Yes, sir. Sir, it's P plus A into V minus V minus B into R is equal to RT. Fine. What are those A and B representing in that equation? Sir, why we introduce those two constants, A and B? Sir, these in this equation, the V minus B tells us it is the volume. It is the volume of the gas minus the. I'm sorry, I couldn't recall that values. Anurag, suppose there is some wet steam there inside a tank, closed rigid tank. Yes, sir. Okay. And you are heating that particular container. You are giving some external heat into the tank. Yes, sir. So what do you feel? The water level in the container is going to decrease or increase? Sir, the water level in the container decreases, sir. So the water level in the container decreases, sir. How you can say that? Sir, actually, we have to see the specific volume, critical specific volume. So we have to consider. It depends upon the. Suppose the initial volume, the initial specific volume is less than the critical volume. Yes, sir. Then the water level, then the level increases, sir. Water level increases, sir. Water level will increase. So it depends. It depends on the case. Yes, sir. Fine. What is that critical volume? What do you understand by critical point? Sir, critical point is the point where the water flashes directly into vapor, sir. There is no enthalpy of heat transfer at the critical point. The enthalpy is 0. Like this case, rigid tank, rigid container we consider, and this kind of container defines a control volume system. Yes, similarly, can you give me one example of a constant pressure, constant temperature, adiabatic, and yes, isothermal process, isothermal system? Which particular process you can consider in constant pressure, constant temperature, adiabatic, and isothermal? Sir, can you please repeat the question? You know, there are so many thermodynamic processes we are having, like isobaric, isochoric, isothermal, adiabatic, and polytropic. Yes, so for isochoric, we can easily consider a rigid tank. Yes, okay, so if you are carrying out any heat addition or rejection from a rigid tank, that is an example of an isochoric process. Yes, sir. So similarly, can you give me some example of isobaric, isothermal, and adiabatic processes?
Anurag? Sir, together, sir, all three together. No, separately. Obviously, separately. How you Sir, can have all three, collectively? Sir, isobaric process we can consider a piston cylinder arrangement, sir, where the atmospheric pressure is acting on the piston, sir. And if we make it if we want to make it adiabatic, sir, we can use insulation to the system where there is no heat transfer from the system to the surroundings, sir. In isothermal process, sir, when we could take when we could take the process at a quasi-static process, like infinitely slowly, if we can make the process happen, we can consider it as a isothermal process. What about adiabatic? Sir, adiabatic process, when we use insulation to the piston cylinder arrangement so that there is no heat transfer taking place from the system to the surrounding, or either way, we can consider it as adiabatic. Actually, if you will talk about free expansion and throttling process, both Yes, are sir. adiabatic. Yes, sir. So on what basis we can consider throttling as well as free expansion as a adiabatic process? Sir, I didn't understand the question, sir. So on what basis we can consider throttling and free expansion as a adiabatic process? Sir, in throttling process, it is the expansion against restriction, sir, where the pressure gets reduced, and there is no heat transfer or work transfer involved in that throttling process, sir. Why? How you can consider there is no heat transfer involved? But because actually there is no insulation, you are going to observe what the throttling valve, whether it is any kind of expansion valve or you are considering the capillary tube. No such kind of insulation you are going to observe. There is no insulation. Then also we can consider the process as a adiabatic. That's why I asked you. There is no insulation, and then also we are considering the process as a adiabatic. So on what basis actually we are considering process as a adiabatic? Throttling and free expansion. Sir, if we consider steady flow energy equation, sir, when the kinetic energy and potential energy are neglected, so here also, so if we don't consider adiabatic process, sir, no, sir, no idea how we get that. Fine. What is second law of thermodynamics, Anurag? The second law of thermodynamics is the directional law, sir, where it tells about the feasibility of a process, whether the process is feasible or not. It also gives a direction for a process, sir. Second law tells that if a process is to happen, it flows in a direction in such a way that the entropy of the process will increase and the exergy of the process will decrease. So in which direction a process is going to execute? Sir, it is going in such a process that the entropy of the system will increase, sir, and the exergy will decrease. Entropy of system will increase. Entropy of the universe, sir. Sorry, entropy of the universe. System entropy can increase, decrease, or it can remain. Sorry, entropy of the universe will increase. Entropy of the universe will increase. Yes, sir. So it means there must be some entropy generation. Yes, sir. There must be some entropy generation. If the process is irreversible, there will definitely be entropy generation, sir. So entropy increases in a real process. Yes, sir. Energy remain conserved. Sir, energy is conserved, sir. What about work potential? What about exergy? Sir, exergy decreases, sir. In a real process, exergy decreases, entropy increases, and energy remain constant. Yes, sir. What do you understand by exergetic efficiency? There is some efficiency known as second law efficiency. What is that? Yes, sir. So second law efficiency is basically it's a ratio of actual efficiency to the ideal efficiency, sir. Since the second law is the law that provides us about the ideal efficiency, we call it second law efficiency. आपने एक पैरामीटर सुना होगा आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. Isobaric volume, yes, sir. What is that? What actually it represents? Sir? What it represents? That is a property of a gas. What it represents? I couldn't recall, sir. Some kind of Mayer equation. Can you recall? Mayer equation. Yes, sir. Cp minus Cv is equal to R. What is that? What is the relationship?
Sir, the difference between the specific heat at constant pressure and constant volume gives the constant, sir, gas constant. Gas constant. So that is for ideal gas, no? Or that is also applicable to real gas? No, sir, it is for ideal gas, sir. Okay. So can you tell me something about the thermometric property? Sir, thermometric property is the property we consider which changes when there is a change in temperature, sir. So that by measuring this thermometric property, we can measure the change in the temperature, sir. I just suppose there is a closed insulated room. Yes, sir. There is a room fully sealed, fully insulated. Yes, sir. No work exchange with the surrounding, no heat exchange with the surrounding, no mass exchange with the surrounding. Yes, sir. And you are doing some exercise in that room. Yes, sir. Then what will be the entropy change of universe? Sir, it is like a system, isolated system, sir. So the entropy of the system it remains constant if it is a reversible process, sir, or it increases. You are exercising in the room. Maybe Yes. you are lifting some weight, or you are doing some push-ups, or something like that. So Yes. you are exercising in a particular room. The room is fully sealed. There is no light. There is no fan. Nothing. Sir, the entropy of that system will increase, sir. Entropy increase. Why? Yes. Sir, since some heat will be generated, sir, inside the system when we are exercising. So in that condition, I think the entropy of the system will increase, sir. So entropy of an isolated system can increase. It is not a violation. Yes, sir. Entropy of the isolated system, yes, sir, it can increase, sir. It cannot decrease. Fine. Okay, my last question to you, Anurag. Yes, you heard about polytropic process? Sir, yes, sir, polytropic process. Actually, you know, in polytropic process, the work transfer is more than heat transfer. Yes, sir. You know about that? Yes, sir. For the n value ranging from 1 to gamma. But is it possible? Is it realistic? Or even that is a kind of process we are assuming. Yes, but don't you think that is a violation? Because how work can be more than heat transfer? Sir, actually, in that process, the reason given for the work being increasing is, sir, it consumes some of the internal energy to get more work, sir, than the supplied heat. So, in that way, the work is more than the heat supplied, sir. It is consuming some of its internal energy. ठीक है अनुराग, मैं अभी आपको फीडबैक देता हूँ. ओके सर, थैंक यू. अच्छा, ठीक लग रहा है आपका डिलीवरी स्टाइल इज लुकिंग फाइन, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट. अनुराग, दो तीन चीजें जो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना, रिकॉल कर लेना. एडियाबैटिक, इट डजंट like yes, that is a one case. If the system is fully insulated, you can assume the process as adiabatic. But तीन में से कोई एक केस हो जाएगा तो process adiabatic हो जाएगा. Number one, process is very fast. If the process is taking place very fastly, then you can assume accurately, correctly, you can assume the process as adiabatic. Because fast का मतलब क्या है? There is no time for the heat transfer. Like free expansion. Free expansion बहुत fast process होता है, तो हम उसको adiabatic मान सकते हैं. ठीक है. दूसरा कि जो एरिया है, जिस सिस्टम का जो एरिया है, सिस्टम का एरिया इज वेरी स्मॉल, लाइक द कैपिलरी ट्यूब, एक्सपेंशन वाल्व, तो उसमें एरिया क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है. सो द हीट ट्रांसफर विल आल्सो बी वेरी नेग्लिजिबल. तो अगर एरिया स्मॉल है, देन आल्सो यू कैन अज्यूम प्रोसेस एज ए वेरी प्रोसेस एज ए आइडियाबैटिक प्रोसेस. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले कि थ्रोटलिंग भी फास्ट है. गलत हो जाएगा. थ्रोटलिंग फास्ट प्रोसेस नहीं है. थ्रोटलिंग तो बहुत स्लो प्रोसेस है. प्री एक्सपेंशन फास्ट है, बट थ्रोटलिंग भी तो एडियाबैटिक है. क्यों? क्योंकि थ्रोटलिंग डिवाइसेस का जो एरिया होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो उससे जो हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल. और तीसरा एडियाबैटिक कब मान सकते हो? या अगर जो सिस्टम है वो इंसुलेट किया हुआ है. ठीक है. ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आइडियल गैस होता है उसमें हम मान के चलते हैं कि देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल.
but real में they will have interaction, although that interaction will be very less, but the real gas molecule will have some interaction. So that's why that constant A we are introducing for considering the intermolecular force of protection between the gas molecule. अब B कहाँ से आता है? Generally we assume कि the molecules of an ideal gas are having negligible volume. They are like the pointed mass. They are having mass but with negligible volume. But real molecules, they will have some volume. That will not be zero, but that will be very negligible. But you cannot consider it as zero. Okay. So that's why B is coming just to consider the volume of the gas molecules. Okay. वो थोड़ा आप देख के रखना. जूल एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो जिसको हम बोलते हैं कि आपका जो एक काइंड ऑफ सिलेंडर, और उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें हैंड ऑपरेटेड जो आपका एक क्या क्या बोलते हैं उसको, दैट वर्ड आई एम मिसिंग. तो आप उसमें क्या करते हैं, वर्क जो देके जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, साइक्लिक इंटीग्रेशन और हीट इक्वल टू वर्क, दैट इज बेस्ड ऑन द जूल्स एक्सपेरिमेंट ओनली. पैडल व्हील, जो पैडल व्हील वेरी फेमस जूल्स पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको. जूल्स पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट, आर यू गेटिंग? यस सर. तो पैडल व्हील से वर्क देके जूल ने क्या मेजर किया था, जो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज है, सिस्टम को उसने क्या कर दिया, पूरा इंसुलेट कर दिया. जो उसने सिस्टम बनाया ना अपना, पूरा का पूरा क्या था, इंसुलेटेड था. तो he has given different kind of different amount of works, and he measured the change in internal energy by putting the thermometer in that container. Yes sir. उसने ऑब्जर्व किया कि अगर प्रोसेस क्या है आपका, इंसुलेटेड है मतलब एडियाबैटिक है, तो आपका क्या होगा, whatever work you are doing on the system that will go into the raise in internal energy. Yes sir. तो वो जो इक्वेशन आई, that was based on the Joule's experiment only. Are you getting? Yes sir. तो थोड़ा देख के रखना वो जूल्स एक्सपेरिमेंट कैसे है, कैसे करता है. सेकेंड लो एफिशिएंसी मैंने पूछा था, चलो ठीक है, वो क्या होता है आपका, एक्सर्जेटिक एफिशिएंसी होती है. इंजन के लिए तो हम इसको डिफाइन करते हैं W एक्चुअल बाय W मैक्सिमम. रेफ्रिजरेटर के लिए डिफाइन करते हैं COP एक्चुअल बाय COP मैक्सिमम. इन जनरल ये क्या होता है आपका, एक्सर्जी यूटिलाइज्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोसेस टू द एक्सर्जी एक्सपेंडेड इन ए पर्टिकुलर प्रोसेस. कितना यूटिलाइज किया, कितना एक्सपेंड किया, कितना आपने खर्च किया, इन्वेस्ट किया. बीटा होता है आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. यस सर. क्या होता है ये, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस पर यूनिट, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. डेल V बाय V बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर. कितना वॉल्यूम चेंज हुआ पर यूनिट वॉल्यूम विद पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, तो आप बोल सकते हो डेल V बाय डेल T. यस सर. बाय डेल V at constant pressure. Change in volume per unit change in temperature per unit volume at constant pressure. That is isobaric volume expansion coefficient. जो कि कितना होता है, that is equal to 1 by T. Okay sir. 1 by T होता है ना किसके लिए, आइडियल गैस के लिए. आइडियल गैस. चलो ये थोड़ा इक्वेशंस वगैरह देख के रखना. बाकी ठीक है आपका, मेरे को ठीक लगा अनुराग, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस फाइन. जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कंटेनर के लिए, तो वो थोड़ा सा देखो आप कैसे डिफाइन करोगे. आइसोबारिक कहाँ पे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट सर, इफ यू आर एडिंग हीट और रिजेक्टिंग हीट. फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है सर, अगर हम उसमें रिजेक्ट करेंगे या हीट एडिशन करेंगे तो वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर की तरह एज्यूम कर सकते हैं. तो उसको समझाओ आप कैसे करोगे. सिमिलरली आपका जो एडियाबैटिक है, चलो वो तो आपने एग्जांपल दिया ही था एडियाबैटिक का, इंसुलेटेड अगर है. और आइसोथर्मल के लिए, इफ यू आर एडिंग और रिजेक्टिंग हीट with infinitesimally small temperature difference, या कोई फेज चेंज हो रहा है, that process also you can consider as a isothermal process. वो ठीक था. एक मैंने आपसे रिजिड कंटेनर का पूछा था, वेट स्टीम है तो क्या बढ़ेगा, तो उसमें पहले सोचना है. आपको पता था आंसर, बट यू डायरेक्टली रीच्ड टू सम कंक्लूजन. पहले उसमें बोलो कि सर द गिवन वॉल्यूम इज लेस देन क्रिटिकल वॉल्यूम या मोर देन क्रिटिकल वॉल्यूम, बिकॉज़ द आंसर विल डिपेंड ऑन दैट, है ना. ऐसा कुछ करके आपने पहले उसको बोल दिया था कि घटेगा. यस सर. वो नहीं बोल सकते ना. ठीक है, ठीक है अनुराग, मेरे ख्याल से ठीक है. आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज लुकिंग फाइन. थोड़ा और इसको रिवाइज कर लो, और एनी टेक्निकल डाउट और क्वेरी यू कैन रीच टू मी. सर sir, is it okay if, for interview I follow PK now, is there anything? हाँ सही है, बिल्कुल सही है. Yes, बिल्कुल सही है. पीके नाग को देख लो आप, और उससे पहले मैराथन क्लास भी देख लेना डॉक्टर विजेंद्र सर. yes sir, yes sir. मैराथन क्लास देख लो, पीके नाग देख लो, कुछ स्नैप लगा लो, यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग. पीके नाग इज अ वेरी गुड बुक ना, बहुत अच्छा है. Sir, one question sir. Sir, heat transfer is associated with entropy transfer sir.
हाँ, always. Where the disorder systems disorder increase, sir. Sir, work transfer is not associated with entropy transfer, sir. हाँ, बिल्कुल. But in work transfer also the internal energy increases, sir. The temperature of the system increases. नहीं, देखो वर्क का अगर फॉर्म वर्क में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वर्क अगर सिस्टम कहीं बाहर जा रहा है, Yes, sir. वर्क तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना. Yes, sir. तो वो एंट्रोपी को अपने साथ लेके नहीं जाएगा. Okay, sir. बिकॉज वर्क में एंट्रोपी है ही नहीं है. वर्क इज ए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. लाइक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर. काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन. Yes, sir. क्या ऐसा होता है कि कुछ पार्टिकल इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं? नहीं होता ना. No, sir. तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. Yes, तो sir. काइनेटिक एनर्जी क्या है? वर्क है. Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि कुछ पार्टिकल्स को आपने डेटम से कुछ ऊपर कर दिया या नीचे कर दिया. Yes, तो sir. क्या ऐसा होता है कुछ पार्टिकल ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए? ऐसा तो नहीं होगा. ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. फ्लो ऑफ करंट में क्या होता है? It passes from high potential. इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव. ऐसा होता है कि कुछ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, कुछ नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है? नहीं होता ना. ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. Yes, तो sir. क्या है? वर्क है. बट अगर हम बात करें हीट का, हीट क्या है? हीट जो अगर हम बात करते हैं थर्मल या इंटरनल एनर्जी जो है आपका, किसकी वजह से है? काइनेटिक एनर्जी होता है गैस मॉलिक्यूल. रैंडमनेस. तो हीट अगर कहीं दोगे आप तो वो कहां पे जाएगी? इट विल गो इनटू द इंटरनल एनर्जी. इसकी वजह से रैंडमनेस बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का डिस्टरबेंस बढ़ेगा. Yes, तो sir. वो कहां पे जा रहा है? दैट इज गोइंग टू कॉज द व्हाट रैंडमनेस, एंट्रोपी इनटू द सिस्टम. सिस्टम में जाएगा हीट तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ाएगा, सराउंडिंग में जाएगा तो सराउंडिंग का एंट्रोपी बढ़ाएगा. Yes, sir. ठीक है. तो हीट के साथ एंट्रोपी एसोसिएशन होता ही होता है. दैट्स व्हाई हीट को हम क्या बोलते हैं? लो ग्रेड Low grade energy. Yes, sir. बट वर्क क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी. तो High वर्क grade. आप ले रहे हो तब भी एंट्रोपी नहीं आएगा, दे रहे हो तो एंट्रोपी नहीं आएगा. बट वर्क का कन्वर्जन अगर हीट में हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन. Yes, मान sir. लीजिए ये मैं वर्क कर रहा हूँ, Yes, मैंने sir. क्या किया? वर्क को कन्वर्ट कर दिया हीट में. Yes, sir. तो सारा का सारा वर्क कहाँ चला गया? हीट में. और वो हीट कहाँ गई? सराउंडिंग में. तो एंट्रोपी बढ़ेगा. ऑब्वियसली इट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस. Yes, sir. आर यू गेटिंग? तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क का कन्वर्जन जब हीट में होगा ना, तब एंट्रोपी बढ़ेगा. बट अगर Okay. मैं वर्क को वर्क की फॉर्म में भेज रहा हूँ तो एंट्रोपी कहाँ बढ़ेगा? जैसे But- आपने इलेक्ट्रिक फैन चलाया, आपने क्या दिया उसको? इलेक्ट्रिक वर्क दिया. मिला क्या आपको? मैकेनिकल वर्क. Yes, sir. बट क्या दोनों बराबर मिलेंगे? दोनों बराबर होंगे? नहीं. नहीं. जो मैकेनिकल वर्क मिलेगा आपको वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क से थोड़ा कम होगा. Yes, sir. दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? जो हीट की फॉर्म में बाहर जा रहा है, Yes, sir. Loss. जो वर्क लॉस हो रहा है. Yes, sir. जितना वर्क लॉस हो रहा है आपका, वही क्या है? आपका इरिवर्सिबिलिटी है. Yes, sir. डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल जितना दिया, डब्ल्यू मैकेनिकल जितना मिला, उस प्रोसेस में जितना लॉस ऑफ वर्क हुआ, वही क्या है? आपका इरिवर्सिबिलिटी है. Yes, sir. और उसी की वजह से क्या करेगा? आपका एंट्रोपी बढ़ेगा सराउंडिंग का. आर यू गेटिंग? Yes, sir. क्योंकि वर्क फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर हुआ है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक Clear, है. sir. Thank you, sir. ओके, गुड लक. Thank you, sir.